Hello beauties, welcome back again. Today I'm going to share with you guys this makeup look that is a beginner 3D makeup look. So guys, I am done with my CTM and next मैं use करने जा रही हूँ एक silicone based primer. ये मैंने ओलिविया का व्हाइट कलर यूज किया. इनसाइड के कॉम्पैक्ट से आई एम गोइंग टू सेट दिस. I am placing this yellow color as my transition shade. Next I am making the cut crease. एक cut crease बनाने जा रही हूँ मैं using a concealer. थोड़ा डार्क कलर यूज करूँगी इस पैलेट में से. लाइटर कलर प्लेस करूँगी मैं. थोड़ा मैजेंटा की तरफ जाएंगे हम लोग. दिस वेरी स्लोली थोड़ा रेडियंट करेंगे. मिक्सिंग इफेक्ट देंगे इन कलर्स को. 52 समर ग्रेस पैलेट एंड नाउ आई एम यूजिंग ऑरेंज कलर एंड दिस वन मैं लेना चाह रही हूँ आइलैंड रेड. This yellow color, this one. तो अब हम करेंगे अपनी आईब्रोज को डिफाइन. Like for our foundation, back side of my hand I'm taking the product and this is the shade is French Toast. मेरे स्किन पे थोड़ी यहाँ पे थोड़ी डिस्कलरेशन थी. वहाँ पे मैंने इसको अप्लाई किया है और इसमें काफ़ी अच्छे से कवरेज थी. काफ़ी ज़्यादा नहीं थी. स्टिल इसमें काफ़ी अच्छे से कवरेज है.
एंड गाइस इस फाउंडेशन ने हाइड कर दी है, यू कैन सी। एंड आई एम गोइंग टू सेट इट। एंड नेक्स्ट मैं थोड़ा कर लूँगी अपने फेस को कंटूर। Now fastly do the blending. Now do the powder setting. Next is time for some blush on. I am going to use a highlighter palette. I am mixing this and this color for highlighting. Fan brush. Time for lipstick. गाइस काफी अच्छी लिपस्टिक है ये, यू कैन सी कितना अच्छा इफेक्ट है इससे हमारे लिप को। एंड नाउ जो भी हमने अपने टॉप लैश पे प्लेस किया था उन सारे कलर्स को आई एम गोइंग टू प्लेस ऑन द बॉटम लैश। उसके बाद में प्लेस करूँगी मैजेंटा कलर, विंग लाइनर प्लेस करूँगी मैं। Using the makeup fixer spray.
यहाँ पे आप कोई भी अपनी एक्सेसरी वगैरह अटैच कर सकते। सो ये बन गया हमारा हेयर डू।